Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Phamsi. Today we will discuss the second lecture. In the first lecture, we discussed what is a sentence. So you know a sentence is systematic arrangement of words for the purpose to give some meaning or proper meaning. You know that we wrote some words which were separately, they were meaningful, like we can say I, to, school, can say go, and you can say like. Separately, these words are meaningful when we put commas among these words. These are only the words. But when we arrange these words systematically, then it becomes a sentence. So these words in a sentence are called parts of speech. These words, you can say, they are called parts of speech. And this sentence, in previous lecture, we said that this word like is verb and it is also adjective. Now this becomes infinitive. And this becomes like noun. ठीक है, तो ये अल्फाज अगर हम अलग अलग लिख लें तो ये वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल है, लेकिन अगर इसको हम एक साथ मिलाए तो इसी तरतीब से फिर ये मीनिंगफुल नहीं हो सकते। तो हमने डिफिनीशन में, सेंटेंस की डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स which will give meaning. तो जब ये बामानी मिलाप हो जाता है तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब हमने ये देखा कि ये अल्फाज अपने लिहाज से क्या है, अलग अलग तौर पर और कुछ है, लेकिन जब हम इनको सेंटेंस में रखते हैं तो इनकी मानी बदल जाती है। यहाँ पे टू खोल लीजिए और यहाँ भी टू है, तो यहाँ पे टू के डेफिनेट मीनिंग है, यहाँ पे डेफिनेट मीनिंग है, क्योंकि ये टू जब गो के साथ मिल गया तो इसने इसको इंफिनिटिव बनाया। हालांकि यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये आई जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अब हम
पार्ट ऑफ स्पीच को सीखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, कौन कौन से हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, हमारी एकेडमिक लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इसकी अहमियत क्या है। तो इसी ग्रामर क्लास का मकसद यही है कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्कॉलर, अगर उनका बैकग्राउंड इंग्लिश लैंग्वेज से है या नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर यूज सीख कर इसको अपनी रिसर्च थीसिस में, अपने एसेस में, स्टोरीज में और एप्लीकेशन में इस्तेमाल में लाए, या छोटे छोटे सेंटेंसेस जो बच्चे बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, इनका इस्तेमाल हम सीखें। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है, इसमें अगर हम देख लें तो इसमें सबसे आमतौर पर जो बड़ा होता है या कॉमन, उसको कहते हैं नाउन है। फिर नाउन का भी हम कहते हैं कि प्रोनाउन है। इसके अलावा इसी सेंटेंस को देखते हुए हमारे पास यही जो मैंने आपको बता दिया कि जो लफ्ज है लाइक, तो ये वर्ब भी है और साथ में एडजेक्टिव भी है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे जो है वो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा एक वर्ब है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, pronouns, adverbs, interjection, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं और कैसे होता है। इसके अलावा भी आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके अलावा भी बहुत से हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, एडवर्ब, interjection, conjunctions and prepositions। ठीक है। तो थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में और इस तरह तरतीबवार दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहुंचते जाए और आप अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर को बेहतर बनाएं, ताकि आप अपनी क्लास में, अपने ग्रुप में दूसरों के मुकाबले में इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से मजबूत हो और आपको प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ में कोई मसला ना रहे। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम तरतीबवार एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।